हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज से मैं अपने एक चैनल पे नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एनरिच योर वोकैबुलरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर। इस सीरीज़ में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के डेट वाइज डेट एडिटोरियल पेज के किसी भी आर्टिकल या फिर पैराग्राफ को उठा करके उसे रीड करूँगा इस क्लास के दौरान, और उसमें से जो हार्ड वर्ड्स और उनकी क्या मीनिंग निकलती उन सब की एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे हमारी वोकैबुलरी रिच होगी। प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग भी बहुत एसेंशियल चीज़ है। तो आइए शुरू करता हूँ। एम्बर ऑन इकोनॉमी। Policymakers must focus on inflation as high prices will put up at risk the revival of demand. The latest data on inflation, both in retail who and wholesale prices as well as industrial output estimates, suggest it would be prudent to adopt caution on the outlook for the economy. October's retail inflation based on the CPI showed a slight quickening in overall year-on-year price gains to 4.48% from the 4.35% pace in September, spurred by a persistent acceleration in the prices of certain key food items and transport fuels. Oils and fats logged 33.5% inflation, while meat and fish and pulses and products both saw a marginal easing in the pace of annual gains from September, posting 7.1% and 5.4% increases. However, the food and beverages sub-index that accounts for over half the CPI accelerated 2.3% month-on-month, led by vegetable prices that reared up sharply by 14.2% from September's levels. The sequential trend in the food category is particularly disconcerting as except eggs and fruits, all the 10 other items of the 12 component subindex saw prices accelerate last month. The transport and communication, which encompasses the pump prices of petrol and diesel, logged inflation of 10.9% from the October 2020 level, lending justification to the center's Deepavali Eve decision to cut the excise duty on the key fuels, with the WPI also showing prices pressures intensifying at the wholesale level last month, especially for fuel and power and manufactured products. October's headline WPI inflation accelerated to 12.5% from 10.7 from 10.7% in September. Overall outlook on inflation is still far from reassuring. The index of industrial production data from September also points to a sharp slowdown in output, while IIP growth slumped to an annual 3.1% pace from August's 12%. Overall industrial output of mining, manufacturing, and electricity actually shrank 2.6% on a sequential basis, while the finance ministry has cited monsoon rains for the slump in mining and power generation, which contracted 8.4% and 11% month on month respectively. Index heavyweight manufacturing
Two suffered a 0.5% contraction. Four of the six use-based industrial categories saw output shrink, including consumer non-durables, which contracted 0.9%. The only silver lining was that consumer durables posted a healthy 6.7% jump in production from the preceding month as white good dealers likely stocked up ahead of the festival season. Automobile manufacturing slumped 9% from a year earlier and shrank 3.3% from August's output levels as a global shortage of semiconductors crimped production. Automakers have reported more than 20% declines in production for October as well as the chip scarcity coupled with high input costs abides. And given that manufacturers who have so far sought to avoid risking the 10 years demand recovery by raising product prices may not be able to defer increases for much longer. Policymakers will have to ensure they do not drop their guard on inflation. चलिए इसी के साथ हमारा आज का आर्टिकल समाप्त होता है। आइए एक नज़र डालते हैं इस आर्टिकल के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स पर। आपकी स्क्रीन पर इस समय उन वर्ड्स की मीनिंग दिखाई दे रही होगी, तो कोशिश कीजिए कि इन वर्ड्स को याद कर सके और उनकी मीनिंग्स को भी। तो मैं प्रखर सोनी आपसे विदा लेता हूँ और मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके कोई डाउट्स हैं या फिर किसी शब्द की मीनिंग आपको नहीं समझ में आई है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जल्द से जल्द देना चाहूँगा। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।